So the Christmas season is here, and what's better than baking a fruitcake? So today we'll make the most delicious fruitcake. It has dried apricots, dried figs, cranberries and raisins. This cake is a little bit denser and moist. It even has a longer shelf life since it's a dry cake. Hey guys, I am Chef Aruna from Truffle Baking School, where we turn your passion for baking into a profitable business in just 5 months. Also, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, then subscribe to our channel because we share new and trendy videos every week. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक केक पेस्ट बनाएंगे और इस केक पेस्ट से आप किसी भी तरीके का बन केक इजीली डीमोल्ड कर सकते हैं। So for the cake paste, we'll simply mix oil, soften shortening and some flour. We will properly mix it so that इसमें कोई भी lumps ना हो। और ये केक पेस्ट आप रूम टेम्परेचर में ही 3 महीने तक रख सकते हो। And since it has a neutral flavor, you can use this for any flavor of cake. So our paste is ready. Now we'll brush this nicely on the bun tin. So our tin is ready. Now let's make the fruit cake. उसके लिए मैंने पहले से ड्राई फ्रूट्स को चॉप करके रखा है। That are dried figs, dried apricots, cranberries and raisins. अब हम इन्हें हॉट वाटर में सोक करके रख देंगे। Doing this will make these dry fruits plump. Meanwhile, we'll make the batter. इसके लिए we'll cream butter and icing sugar together until they are light in color. मैंने पहले से ही आइसिंग शुगर को सिफ्ट कर लिया था to avoid lumps. So make sure कि आप भी आइसिंग शुगर को सिफ्ट कर लें। Now we'll add in eggs and egg yolk gradually in parts along with some vanilla essence. अब हम इसमें अपने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को सिफ्ट कर लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल पर्पस फ्लावर। And followed by baking powder. Now we'll strain the soaked dry fruits. अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को फ्लावर से कोट कर लेंगे along with some tutti frutti. Also let us know in the comment section कि अगर हम ड्राई फ्रूट्स को फ्लावर से कोट करेंगे तो क्या होगा। Now we'll fold these flour coated dry fruits into this batter and pour it into the prepared tin. We'll now bake it at 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes or until toothpick inserted in the middle comes out clean. So our cake is out of the oven and it's still warm. So we'll keep it upside down so that ये जब तक ठंडा हो तब खुद ही से डिमोल्ड हो जाए। Also guys, if you're liking this video, then I'm sure आपको हमारी मार्बल केक की रेसिपी भी जरूर पसंद आएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एरिया पे मिल जाएगी। Now we'll pour melted white chocolate from top and place fresh oranges, strawberries and blueberries.
And with this we are done with the fruit cake. I hope आपको हमारी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई हो. So do like, share and subscribe to our channel and do not forget to hit the bell icon to stay notified. And I'll be back with another delicious recipe. Till then, keep baking. Now we'll pour melted white chocolate from top and place. तो फिर मैं ये रख के फिर ये इधर रख लूँगी और